Hello, friends. Good afternoon. Today, we would like to know something very important about the Article 355, which is incorporated in the Constitution of India, and it imposes a very important and, above all, mandatory duty obligation on the Union of India to protect its states. But before we say something on this topic, I would like to introduce you, as usual, uh, my our international law firm, which is known in the name of NIC Legal World. I'm a part of it. I have been appointed partner for the state of Jammu and Kashmir to look after all the operations which will take place in the territory of Jammu and Kashmir. Now, the NIC Legal World is an international law firm. It is founded by Mr. N.K. Gupta, a very well known personality in Delhi. Its head office, cloud based head office, is at Defense Colony, New Delhi, Delhi. Then we have presence at least in every state in India. And globally, we are having offices in Canada and UK, and our law firm is in the process of setting up some more offices abroad, overseas offices, Singapore, Dubai, and our areas of operation are very wide. We take up all the legal issues, legal matters in every field of law. We have a good reputed team at Supreme Court also. We attend all the high courts in India. We take up writ matters, service matters, appeals, revisions, reviews in all high courts in India, and all sorts of matters in Supreme Court of India, like special leave petition, popularly known as SLP, then reviews, then interstate disputes, if any, then writ petitions before Supreme Court and High Court. All matters, appeals, all matters we take up at High Court. We take up matters in tribunals like CAT, Central Administrative Tribunal, where all service matters are being taken up. Then taxation matters, indirect tax and direct tax matters. So we are almost in all the fields, and this is very good opportunity in the state of Jammu and Kashmir, that first time in the history of our state,
union territory, the such international of reputation has set up its foot in in our union territory, Jammu and Kashmir. If you have any question, if you have any query, if you have any matter, you can directly approach the local office, partner office, uh, or you may contact our head office. Visit our website www.legalworldgroup.com. If you will put NIC in Google, you will automatically get our website and there you can visit. And if you approach us through our website, our consultation will be free to everyone. So uh, you can visit the website of our law firm. You can look into the profiles of different competent advocates there, subject experts, and accordingly you can make your strategies to approach us for your legal issue. Thank you very much. Now, the issue, the topic which I am taking up today is regarding Article 355, which has been incorporated in the Constitution of India, in the Constitution of India, and it is very important article to understand because keeping in view the circumstances today around us, I have felt it better that we should understand the duties of the Union of India through the medium of this article. After all, what this article imposes the obligations on Union of India. Before that, you must understand what is this union to which I am referring again and again. You know that if you examine your Article 1 in the Constitution of India, you will find this expression there, Union of States. It means that all the states of India together constitutes a union. तो सभी स्टेट्स मिलकर एक यूनियन बनाती हैं जिसको हम यूनियन ऑफ इंडिया बोलते हैं और ये अगर आप इसको एग्जामिन करना चाहते हैं तो पार्ट 5 of the Constitution of India explains well the union कि हम यूनियन किसको बोलते हैं, क्या है यूनियन के अंदर. तो मैं आपको ब्रीफली आई वुड लाइक टू टेल यू दैट यूनियन, जब हम यूनियन बोलते हैं तो ये यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात हम करते हैं. ये सब मिलके एक यूनियन बनाती है जिसको यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो बोला जाता है, भारत बोला जाता है. तो जो यूनियन पर्टिकुलरली है इसमें you will find the union executive, parliament, where law is made, where you elect your representatives in your states and you send them to parliament to represent your interests. तो वो पार्लियामेंट जो है वो यूनियन में है
फिर यूनियन की जुडिशरी है जिसको हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इज प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसके जो हेड होते हैं उसको हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो प्रेसिडेंट हेड्स द एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव में जो मेन रोल रहता है वो रहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, जो कैबिनेट बनाई जाती है। जो जब आप लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप मेजॉरिटी में चुन के लाते हैं, तो वो गवर्नमेंट की फॉर्मेशन जो है वो करती हैं। तो जब वो गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होती है तो फिर वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और फिर इनकी एडवाइस, कैबिनेट की एडवाइस के ऊपर जो हमारे हेड हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो जो हैं वो एक्ट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो कहने का मतलब डायरेक्टली तो जो प्रेसिडेंट जो हैं वो एग्जीक्यूटिव हेड हैं, लेकिन जो पावर्स जो एक्सरसाइज की जाती हैं वो एक्सरसाइज होती हैं थ्रू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अलोंग विद प्राइम मिनिस्टर, ये दिस इज द मोस्ट पावरफुल पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट है और प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि जो पावरफुल हैं एग्जीक्यूटिव के पार्ट के, और यही से सारी एक्सरसाइज होती है पावर। और जब पार्लियामेंट में कोई लॉ बनता है तो वो लॉ जो है, जो पार्टी तो मेजॉरिटी में होती है लेजिस्लेट करने के लिए, तो वो आसानी से जो है वो लेजिस्लेशन जो है वो लॉ जो है वो बन जाता है। तो अगर आ, कोई पार्टी मेजॉरिटी में नहीं है तो फिर जो बाकी की जो पॉलिटिकल पार्टीज जो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, उनकी हेल्प से जो है लॉ मेकिंग, जो लॉ को पास करवाना का जो प्रोसेस है वो होता है। और अगर वो पार्टीज जो रिप्रेजेंटेटिव्स एमपीज हैं अगर वो सपोर्ट नहीं करते टू द रिक्वायर्ड नंबर्स, तो वो लॉ जो है वो नहीं बनता है, दैट फेल्स। तो आज के दिन में हम देखते हैं कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव है वो कितनी स्ट्रांग है, कितनी मेजॉरिटी के अंदर है वो, कि उन्हीं के जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो पार्लियामेंट में मेजॉरिटी में बैठते हैं, और उन्हीं की गवर्नमेंट है जो एग्जीक्यूटिव है, उन्हीं का स्पीकर है उसी पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टी का, और उसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट हैं जो कि एग्जीक्यूटिव हेड है। तो नाउ यू कैन असेस कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर along with council of ministers, along with president of India, along with legislation majority, legislative majority पार्लियामेंट में, तो वो कितने ज्यादा पावरफुल हैं कि सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। प्रेसिडेंट भी और प्राइम मिनिस्टर भी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी,
और और पार्लियामेंट जिसमें मेजॉरिटी चाहिए लॉ मेकिंग करने के लिए, वो एक ही जगह पे वो कंसंट्रेट है। तो आप यू कैन इमेजिन दी सिचुएशन, द एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर नाउ, कि वो कहीं से भी फेल नहीं हो सकते हैं, बल्कि वो सबको फेल कर सकते हैं। तो ये दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन विच आई एम टेलिंग यू, कि अगर इस तरह की स्थिति बन जाए तो एग्जीक्यूटिव की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, कि so long as such government remains in power, they enjoy unlimited executive power, and then they can make any policy, they can legislate to any extent, because there is no body to intervene. उनको इंटरफेयर करने के लिए कोई भी नहीं है। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। तो इस सिचुएशन में, जो सिचुएशन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, being a constitutional student of constitution, being a lawyer and student of constitution, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपकी वोटिंग की पावर से क्या हो जाता है। दिस इज व्हाई आई ऑलवेज emphasize on the use of your wisdom while you vote to some party। तो ये सिचुएशन है हमारी एग्जीक्यूटिव की इस वक्त, every power is concentrated in the executive, leaving aside the Supreme Court। तो सुप्रीम कोर्ट की भी ये सिचुएशन रहती है कि अगर कोई जजमेंट जो है, सुप्रीम कोर्ट कोई लॉ बनाता है तो उसको सेट असाइड करना है, तो पार्लियामेंट possess the power to overrule that by way of legislation। तो such is the position that today the executive is so powerful, it has so much strength that it can do anything which they formulate in their minds। तो इसलिए अपनी वोटिंग पावर को पहचानने की कोशिश करिए। ये मामूली आम बातें नहीं हैं ये। The life of your generations, the life of yours and your generation depends upon your wisdom। तो अब मैं आता हूं, ये मैंने आपको बताया है पार्ट 5 एंड 6। पार्ट 5 में यूनियन के बारे में बताया गया है कि इसमें क्या क्या है। स्टेट्स पार्ट 6 में है कि स्टेट्स कैसी होती हैं, स्टेट्स की कॉन्स्टिट्यूशन कंपोजिशन क्या है। पार्ट 5 में यूनियन की कंपोजिशन, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी कंपोजिशन यूनियन की ये होती है, ऐसे स्टेट्स की होती है। तो एक और चीज़ आप समझने की कोशिश करिए कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव अडॉप्टेड we have adopted the federal structure, federation। We have a federal structure and partly unitary structure, meaning thereby कि states हैं और union है, और out of these two union is the most powerful।
और मैंने एक्सप्लेन भी की है सिचुएशन आपको कि यूनियन कितनी पावरफुल है और स्टेट्स उसके मुकाबले में ना के बराबर है। क्योंकि जब यूनियन चाहेगी तो स्टेट्स को किसी भी तरफ ले जा सकती है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने की कोशिश करें, कंपोजिशन पावर्स को कंपेयर करें, तो यूनियन स्टेट्स को कुछ भी कर सकती हैं, स्ट्रक्चर को चेंज कर सकती हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द checks and balances should always prevail. Either it is the states, it is the state, or it is the union. The checks and balances must hover on them. But despite this, because कुछ कन्वेंशंस होती हैं जिसकी वजह से कोई स्ट्रक्चर चलता है, अगर हम उन कन्वेंशंस को मानना ही बंद कर दें तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे यूके की आप एग्जांपल ले लीजिए, देयर इज नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द यूके, द ओनली अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफ यूके। UK is having the unwritten constitution, but it works on conventions, strong conventions, कि वहां प्राइम मिनिस्टर ने अगर कोई बात की है और वो कन्वेंशंस के खिलाफ जाती है या वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल किसी भी कन्वेंशन के खिलाफ जाती है या किसी लॉ के खिलाफ जाती है, तो cognizance is taken there. अभी बोरिस जॉनसन के केस में यही हुआ। तो अगर हम कन्वेंशंस को मानना बंद कर देंगे तो हम किसी भी पाथ पे जो है जा सकते हैं, डिट्रैक हो सकते हैं। दिस इज व्हाई द forefathers have given us the constitution so that we could stick to its principles, we could stick to it to govern the nation, we could stick to it to protect the interests of the citizens and the interests of our nation and the interest of our generations. This is why the constitution has been given to us by our forefathers. You must understand this. It is not a book, piece of document only. This is a sacred piece of document on which the life of the nation depends. So don't take it lightly. Understand your constitution. Broaden your mind. Whether you are a bureaucrat, whether you are a student, whether you are a lawyer, whether you are a doctor, whatever you are, wherever you are, in which field you are, you may be a scientist, very good scientist, but you must have knowledge regarding your constitution because your everything is dependent on the constitutional principles. Your life, your own life, your generation's life is dependent on your constitution only. तो हमें देखना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पाथ है उस पाथ से कोई डी ट्रैक ना, कोई भी गवर्नमेंट डी ट्रैक करने की कोशिश ना करे। और अगर वो डी ट्रैक होती है तो सुप्रीम कोर्ट इज सिटिंग देयर, हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स आर सिटिंग देयर। They should immediately, instantly take a note of it and put the executive on the track without any dubitation, without any hesitation, without any wait.
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं उसी पे आर्टिकल 355 के ऊपर आता हूँ। उससे पहले पार्ट 9 भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये बताता है कि पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रादर 11, पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, इट एक्सप्लेन्स, ये बताता है कि यूनियन ऑफ इंडिया के रिलेशंस हमारी स्टेट्स के साथ कैसे होने चाहिए, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हो, चाहे वो फाइनेंशियल रिलेशंस हो, या कोई भी रिलेशंस हो, वो कैसे होने चाहिए। उसमें एक पूरा जो है वो प्रिंसिपल्स लेड ऑन किए गए हैं कि हाउ द यूनियन शुड act, how the states should act vis-a-vis the union, and how the union will act vis-a-vis the states। तो ये रिलेशंस के बारे में हमें यहाँ से पता चलता है, which you should also read and try to understand। तो मैं अब डायरेक्टली आता हूँ आर्टिकल 355 के ऊपर, विच आई विल रीड फॉर योर बेनिफिट। ये आर्टिकल 355 states duty of the union to protect states against external aggression and internal disturbance। So this article, Article 355, it imposes a mandatory duty on the Union of India to protect the rights of the states। और उसको प्रोटेक्ट करे स्टेट्स को फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन और फ्रॉम any sort of internal disturbance। So now there are, I will read out the whole article. It shall, you just keep on an eye on this, what I speak. It shall be the duty of the union to protect every state against external aggression and internal disturbance, and to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provisions of this constitution। So you have seen the language of the constitution. Now you have to give meaning to it, and you can give meaning to it only if you have some wisdom in you। It is not necessary always to give literal meaning to it. You have to see the overall circumstances around you, and you should try to find out, and you should try to apply the sense, the spirit of this article। कि इस आर्टिकल में ये क्यों कहा गया है, हमारे फोर फादर्स ने क्यों ये इनकॉर्पोरेट किया ये आर्टिकल 355 में, 355 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको एक सिचुएशन बताई कि यहाँ पे यूनियन जो है इतना पावरफुल हो सकती है जब उसके पास अपना प्रेसिडेंट भी है, एग्जीक्यूटिव हेड भी है, उसके पास अपना प्राइम मिनिस्टर भी है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी अपनी है, और पार्लियामेंट में मेजॉरिटी है लॉ मेकिंग की। तो उसकी स्ट्रेंथ को आप जानने की कोशिश करिए कि उसकी इतनी स्ट्रेंथ है कि वो कुछ भी कर सकता है, इतना पावरफुल जो एग्जीक्यूटिव है। तो इसीलिए ये एक मैंडेटरी ड्यूटी इम्पोज की गई थी यूनियन ऑफ इंडिया के ऊपर 355 आर्टिकल के द्वारा कि भाई आप जितने मर्जी पावरफुल हो जाओ,
no problem, no issue. But Constitution of India imposes, enjoins upon you the mandatory duty to protect your states from any sort of external aggression. कोई बाहर से कोई आपको हिलाने की कोशिश करता है, आपको इंटरफेयर करने की कोशिश करता है आप स्टेट के अंदर, तो ये यूनियन ऑफ इंडिया की ड्यूटी है कि उस स्टेट को प्रोटेक्शन दे। क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया के रिसोर्सेज जो हैं वो वास्ट है, उसकी पावर बड़ी वास्ट है, उसको फेडरेशन को बचाना है। तो इस आर्टिकल के द्वारा एक ड्यूटी इम्पोज की गई है कि उसको आप स्टेट को अपनी आ, उसको हेल्प एक्सटेंड करो, प्रोटेक्शन एक्सटेंड करो और उसको प्रोटेक्ट करो। दिस इज योर ड्यूटी। यू कैनॉट से नो, यू कैनॉट टर्न योर फेस, you cannot put down your eyes to say I will not. Constitutionally it is mandatory, it is imposed upon you to protect your states अगर कोई एक्सटर्नल अग्रेशन है और अगर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस है तो तब भी स्टेट स्टेट जो यूनियन है उसको प्रोटेक्ट करना है अपनी स्टेट्स को हर लिहाज में। तो एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस दोनों के लिए ये ड्यूटी इम्पोज की गई है कि स्टेट को प्रोटेक्ट किया जाए। यूनियन जो है स्टेट को प्रोटेक्ट करे। तो ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है सस्टेन रहेगा, उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, सस्टेन रहेगा और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स जो हैं प्रोविजंस के मुताबिक वो अपना काम करता रहेगा। तो इसीलिए यूनियन के ऊपर ये ड्यूटी बनती है कि अपनी स्टेट को डिस्टर्ब नहीं करना है, बल्कि उसको डिस्टर्बेंस से बचाना है। से फॉर एग्जांपल that if the government is elected in any state, then if anybody, any political party tries to break that government, which is constitutionally elected and is being run constitutionally by the chief minister along with the executive head of the state, the governor. तो उस इलेक्टेड गवर्नमेंट को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। अगर वो डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है, उसको डिस्टेबलाइज करती है, उसको तोड़ने की कोशिश करती है, तो दिस इज इंटरनल डिस्टर्बेंस टू दैट स्टेट। नाउ it is the duty of the government, the Union of India, the government of the day, to see to it, to look to it, that the government which has been constitutionally elected should run in accordance with the constitution. And if any political party or anybody tries to cause disturbance or tries to destabilize that government, then Union of India is constitutionally bound to protect that government.
This is what Article 355 is. Because ultimate object, underlying principle, the aim of our forefather is that our federation, our federal structure should not be upset. It should not be destabilized. The governments which has been elected in the states constitutionally by the process of vote, ballot, that should run in accordance with the constitutional provisions. This is what Article 355 says. You may give any meaning to it, but this is the real meaning to it. You cannot give meaning which you like. You have to give meaning which protect our constitution, its structure. सो ये आप इसको इतना ही अंडरस्टैंड करिए आप कि किसी भी इंटरनल डिस्टरबेंस में बाहर से कोई एक्सटर्नली कोई एग्रेशन हो, वहां से भी प्रोटेक्शन यूनियन ऑफ इंडिया को देनी है, स्टेट्स को, और ना कि स्टेट्स को डिस्टर्ब करना है इंटरनली। तो ये सारी चीज़ें या जो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, अगर वो फॉर्मेशन करती हैं गवर्नमेंट की, तो वो अपनी गवर्नमेंट्स को वहाँ पे लॉन्च करने के लिए वो डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट करवाती हैं। इवन दिस इज प्रोहिबिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय द आर्टिकल 355 of the Constitution of India. So here I will end this topic on the subject of Article 355 Constitution of India, which impose mandatory duty on the Union of India to protect its states from external aggression and internal disturbances, and help the states to run its governments in accordance with the constitutional provisions. Thank you very much. Have a good day. Thank you.